Hi, hello, welcome everyone. Economic business commercial law के लिए another important topic Indian Contract Act. Exactly, काफी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक कई जगहों पे पढ़ा है. किसी ने कॉलेज में, किसी ने अपने CSE या फाउंडेशन लेवल पे. लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आए हैं. ओके, तो इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से देख के जाने. वेल, जैसे एक क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म्स क्या रहते हैं. सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं वो जरूर देख के जाना एग्जाम्स के हिसाब से. क्लियर. देन उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी देख के जाना, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हो सके तो एक टेबल शेप, एक टी शेप बना के ही डिस्टिंग्विश करना प्रेफरेबली अच्छा लगता है. ठीक है. सो वाइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंड यस व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. काफी फेमस रहा है डिस्टिंग्विश. जरूर देख के जाइएगा, ये टॉपिक को अच्छे से याद करके जाना, बिकॉज ये चैप्टर पे क्वेश्चन आया और मार्क्स लूज करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता है. Okay, then when a contract becomes void under the Indian Contract Act, what is the essence of the agreement? Well, देखो, जब तक contract enforceable by law है तब तक ठीक है, नहीं तो वो void ab initio हो जाता है. The void ab initio होने की कई रीजन है. कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में void हो सकता है जब प्रोमिसर परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर वो एक इलीगैलिटी को ऑब्टेन कर लेता है, या अनसर्टेन हो जाता है, या फिर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है. ओके, सो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक जरूर देखे जाना. उसी तरह ये टॉपिक भी देखे जाना, व्हाट आर द मोड्स इन विच द ऑफर स्टैंड्स रिवोक. दैट इज पूरा का पूरा ऑफर अपने आप में रिवोक हो जाता है, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर रिवोकेशन ऑफ ऑफर आता है. ओके, सो ये पार्ट भी देख के जाइएगा. इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट बी लुकिंग इनटू. नाउ डिस्कस द प्रोविजन इन रिलेशन टू माइनर इन इंडिया. तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनस कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऑनर किए जाते हैं, वो पार्ट भी अच्छे से देख के जाना. अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी एक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो देख के जाना. मौरी विवी वर्सेस धर्मदास घोष, एग्जैक्टली. ओके, वेरी गुड केस. एंड अगर अलग अलग सिचुएशंस में माइनॉरिटी के कैसे फेजेस हैं वो जरूर देख के जाइएगा. प्लस discuss the provision of consideration of Indian Contract Act. Exactly, Indian Contract Act में consideration का क्या element है, कैसे consideration लिया जाता है, what is the element to be seen, ये सारा part जरूर देख के जाना. What is the consideration of the Indian Contract Act and what is meant by privacy of contract. Privity क्या चीज है ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, और 2018 जून में पूछा भी, the contract cannot confer the right to impose obligations arising it on any person or an agent except the parties to the contract. Critically analyze. ये statement नहीं दिखाता है the contract needs a privity. Please exam में question ध्यान से पढ़ना, because topic identify करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. ओके, तो इस पूरे स्टेटमेंट में आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एंड स्टिल दे हैव आस्क्ड यू इन एग्जाम्स, तो प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइए. देन another thing that you have to study for your examination, okay, that is fraud and innocent misrepresentation का क्या distinguish है. What is the fraud and what is the innocent misrepresentation, तो क्या है ये पार्ट अच्छे से देख के जाना. और another topic that you must study for your examination, okay, what is the agreement in restraint of trade. Okay, so एक agreement अगर ट्रेड से restraint है, agreement ट्रेड के हिसाब से नहीं है, तो उसके implications क्या होंगे. Okay, so do read this part, do it well for your examinations. So which are the agreements which are in restraint of trade. Okay, so do read it well for your examination. And yes, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ पूरा पढ़ के जाना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन जो भी टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए. So what do you mean by discharge and what are the methods of discharge. So methods discharge क्या है and discharge क्या होता है वो भी देख के जाइएगा. प्लस उसके साथ साथ डिस्कस द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी, or an agreement to do an act is impossible itself. So what is the discharge? What do you mean by supervening impossibility and initial impossibility? ये part भी जरूर अच्छे से देख के जाना. Okay, and discuss the breach of a contract of what is anticipatory breach. ये part भी देख के जाना, what is a breach and what is a anticipatory breach of a contract.
Okay. Then apart from this, discuss the quantum merit principle. Exactly what is the quantum merit principle? ये quantum merit principle कैसे exercise होता है? क्या-क्या चीजें इसके required है? Okay, and one party cannot be benefiting from the conduct of the other party. तो ये principle क्या बोलता है? Do check it out and read it well. और एग्जाम के अभी recent June 22 में पूछा था quantum merit और anticipated बीच में distinguish क्या है? वेल आइडियली ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है, इसलिए पैराग्राफ फॉर्म में इसका आंसर लिखना प्रेफरेबल था. ओके, सो इसका आंसर भी है और अच्छे से देख के जाना ये टॉपिक आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आ सकते हो. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडेमनिटी एंड गारंटीज. यस, इंडेमनिटी और गारंटीज के अंदर का क्या डिस्टिंग्विश है? टी शेप में लिखो तो अच्छा लगेगा और यू कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन यू. ओके, so indemnity and guarantee का टॉपिक जरूर देखे जाना. Another important distinguish is bailment and pledge. Yes, bailment and pledge किस नेचर में है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर हो सकते हैं, ये जरूर देख के जाइएगा, बिकॉज bailment and pledge के काफी सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको याद रखने चाहिए. And we come to general lien and particular lien. एक जनरल लीन कैसे एक्सरसाइज होती है? जनरलिटी ऑफ लीन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय एक्सरसाइजिंग द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स लाइक अ फैक्टर्स लीन, ब्रोकर्स लीन, अटॉर्नी लीन. बट जब ये पर्टिकुलर लीन पर्टिकुलर बेली को पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी गई है तो उसके ऊपर एक्सरसाइज होती है, हमने पूरा समझा था. फाइंडर ऑफ द गुड्स, एग्जैक्टली व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स. फाइंडर ऑफ द गुड्स क्या है, कैसे है, ये पार्ट भी अच्छे से देख के जाना. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. So what do you mean by agency by ratification? How agency by ratification is coming into picture? देख के जाना. When is agency irrevocable? Okay, agency becomes irrevocable under certain circumstances. तो ये टॉपिक भी अच्छे से एग्जाम में देख के जाइएगा. Okay, then about do read this topic also. बहुत से लोग इस चीज को मिस कर गए थे पिछली बार और जून 17 में आ भी गया था. So what do you mean by uberima fidei contract, or which contracts are generally created as uberima fidei? That is a contract of utmost trust, जहाँ पे आप सामने वाले पार्टी पे पूरा विश्वास करते हो. Okay, the contract of insurance, prospectus, contract of sale of land and family arrangements contracts are uberima fidei contracts. Okay, वैसे केसेस डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारे केसेस हैं और ये चैप्टर अपने केसेस के लिए बहुत ही फेमस है. मेरा सजेशन ये है कि पिछले जून 17 जहां से आपका नया सिलेबस शुरू हुआ है, एटलीस्ट अगर मैं बहुत एग्जाम वाले दिन पे बहुत सारे केसेस नहीं देख के जा सकता और अगर आपने ये सारे केसेस वैसे भी पहले पढ़ लिए तो जून 17 से जितने भी केसेस आए हैं वो जरूर देख के जाइए. यहाँ से आपका नया सिलेबस आता है. So यहाँ पे cases like A invites B to stay with him during winter vacation at his residence, and B accepts the invitation and informs A accordingly. When B reaches A's house, he finds it locked. Oh dear! And he has to stay at hotel. Can B claim damages? Well, नहीं, ये एक social and domestic contract है और यहाँ पे damages नहीं आ सकता. 21st का question, that is June 17 का again था. Aman hired a room in a hotel and paid a week's rent in advance. After registration, he went to occupancy room and Aman found a notice on the wall that the proprietor will not be responsible for the article lost or stolen unless handed over to the manager of the hotel for safe custody. Now, owing to the negligence of the hotel staff, a thief gained the access to the room and stole some of the goods of Aman. State whether the proprietor of the hotel is liable for the loss caused to Aman. State also which type of contract. Well, यहाँ पे clear था कि Aman को पहले नहीं बताया गया था कि ऐसा सब चीजें हो सकती है, तो ये अमन को पहले बता देना चाहिए था, तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को वो परफॉर्म यानी ऑब्लाइज करने से पहले रुक भी जाता. लेकिन क्योंकि उसको नहीं बताया गया था तो इसके लिए अमन का लॉस हुआ है, वो डैमेजेस तो क्लेम कर सकता है. ओके, तो होटल कैन बी मेड लायबल फॉर द कॉस्ट. बाय द वे, ये एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट है. विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने फोन पे या जैसे भी करके बुक किया था. A agreed to supply B certain goods to be produced from Indonesia. The goods could not be produced due to rights and civil disturbances in Indonesia. To decide whether non-performance of the contract may be excused, well, this case may non-performance cannot be because this is not a supervening impossibility. ओके, राइट्स वगैरह थोड़े टाइम के लिए होती है और ये कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने से मना कर दो. सो एज अ रिजल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेबल रीजनेबिलिटी अलाउड नहीं होगी. बट अनलेस सिविल डिस्टर्बेंस अगर बहुत बड़े समय तक चले
तो फिर बात अलग होती है. Okay. The next one is December 17 ka question. Mr. X, in consideration that Mr. Y will employ Mr. Z in collecting the rent of Zamidari, promises to Mr. B to be responsible to the amount of 10,000 for the due collection and payment to Mr. Z of these rent. Whether it is a contract of guarantee, exactly it is a contract. And which type of guarantee is this? A kind of fidelity guarantee. कि आप मेरी बातों पे विश्वास करो, and which guarantee can be revoked. Okay, which guarantee, when can such guarantee be revoked? अगर security अपने बराबर, that is surety can revoke a guarantee अगर principal debtor ने कुछ गड़बड़ की है या फिर creditors ने contract के terms को change किया है. After giving the notice to the parties या फिर on death of the surety, such kind of contract can be revoked. Okay, so इस चीज के बारे में ध्यान रखना. Okay, another June 18 का question. As I told you, exam से पहले बहुत pressure होगा, तो at least वो question देख के जाना जो June 17 से लेके latest तक आए हुए हैं. और ये चैप्टर अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमेशा फेमस रहा है. John, who is known minor, fraudulently overstates his age and takes delivery of motor car after executing a promissory note in favor of the dealer for its price. He does not knowingly honor his promissory note. That is to say, he does not pay the price of the motor car. Now, what is the remedy available to the motor car dealer? Well, यहाँ पे minor है, ये बात में साथ में ये भी बोला गया है कि it is a known minor. So he cannot be prevented from dealing in the defense that he is a minor when he entered into contract. However, specific relief act एक right of restitution देता है जहाँ पे हम minor को बोल सकते हैं कि उसके पास जो property गई है वो at least वापस कर दे. तो at least वो property वापस हो जाएगी तो काम हो जाएगा. Okay, so that property can be demanded back. Chemexo Limited offered a reward of 10,000 by advertisement to anyone who infected influenza after using the smoke ball in the specified manner. Mrs. Upmas uses the smoke ball in the specified manner, but still infected by influenza. She claims the reward. Decide in the case with help of leading decided case law and related section. Well, ये case clearly speaks up. It's a Carl versus Carlyle smoke ball company case. काफी famous case रहा है, जिसमें ये clearly held किया गया कि अगर सामने वाले पार्टी ने general offer as per the terms of the offer accept की है and that party has the knowledge of the offer, so that party can make the company liable and successfully succeed also. Okay. December 18 का case. AZB company offered an advertisement and a reward of 1,000 to anyone who contacted influenza after using the smoke ball in the specified manner. Amita used the smoke ball in the specified manner but was attacked by influenza. She filed a case against AZB and claimed reward. Whether she can succeed again a case of Carlyle versus Carlyle smoke ball company, तो कभी-कभी same topic पे भी questions आते हैं. That's what I was insisting upon. Okay, and Ram, employed in Mumbai, promised to pay 8,000 per month to his wife Sunita. Okay, and she was living in Delhi. On receiving the information that she has become unfaithful to him, Ram stopped the payment of 8,000. Sunita approaches to file the case. Can she get? No way. It's a social contract. A social contract cannot be enforced. Okay. Then another case, 2019 December kata. A advertises in the newspaper that he will pay rupees 1,000 to anyone who brings him to his lost son. With B, without the knowledge of this rewards, finds a son and restore him. Can be claimed the reward? Well, Lalman Shukla versus Gauri Dutt. अगर सामने वाले को ऑफर के बारे में नहीं पता है तो वो उसका acceptance नहीं दे सकता. So the performance of the condition was without knowing the offer. Okay, he cannot claim the reward. Another case was that is December 2019. Avanti took out a motor car insurance for Healthy Trip Insurance Company. A check was issued under the contract of insurance of motor car by the insured for the payment of the premium. However, the check was dishonored for want of funds. Meanwhile, the car met with the accident badly, killing the insured. The claim of the company amount of repudiated by the company. Decide whether the contract of insurance has been performed and analyze the provisions in this regard. Well, इसमें provision analyze क्या करना? Well,
यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सीमा मल्होत्रा का केस था और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को कंप्लाई करेगी तो ही दूसरी पार्टी अपने प्रॉमिस के लिए लायबल है। अब क्योंकि यहाँ पे पहला ही प्रॉमिस फेल हो गया, प्रीमियम प्रॉमिस वाज नॉट ब्रीच्ड द इंश्योरेंस कंपनी, the insurance company then is not liable. That's called reciprocal promise. The healthy trip insurance company cannot be recovered. Another case, that is December 2020 ka Amit's son absconded. He sent Suresh, his servant, in search of the boy. When Suresh left, Amit by handbills offered to pay 5,001 to any person who find him. Suresh found the son and after coming to know of the offer, claimed the amount. Can he claim the amount? Again, Lalman Shukla versus Gauri Dutt ka case. And that's what I say, kabhi topic repeat ho jate hain, to use this privilege. And that's why at least do these many questions. Okay. And another one was August 21 ka A puts M as an apprentice to B and gives a guarantee to him of his fidelity. The promise on his part that he will not at least once a month see that M make up the cash. B omits to see the promise then and embezzles. A is whether A is liable, well इस case में A liable नहीं है. Same guarantee का case था, fidelity guarantee का case था और वो आपने ऊपर भी ऐसा ही case पढ़ा था. तो यहाँ पे वो liable नहीं हो सकता surety because यहाँ पे principal, यहाँ पे creditor के ऊपर जो obligation casted थी वो उसने बराबर से complete नहीं की थी. Okay, so that can be a safety ground that can be claimed in this case. And F for natural love and affection promises to give her husband 1 lakh, but after some time F refuses to fulfill the promise. Whether what D should do? Well, actually she should do nothing or he should do nothing about it because ये एक social promises है. Social promises अपने आप में enforceability नहीं रखती है. Okay, so she is not entitled to any kind of compensation. In pandemic of COVID-19, a drug company made an offer by advertisement, a reward of rupees 10,000 to anyone suffering from COVID after using their drug in the prescribed manner. And Mrs. Romila have taken the drug in the prescription and not been cured. Same Carlyle versus Carlyle Spokewall company का case था. So as you can see, कई बार cases repeat होते हैं. आपको सिर्फ case समझना है, अच्छे से suitably answer blend करना है और अपने एग्जाम में उसको प्रॉपर्ली प्लेस करना. Okay? June 22 का क्वेश्चन था, Raman borrows 5,000 from Bowman and promises to pay 10,000 if he fails to pay on stipulated date. As on Raman's failure to pay on the stipulated day, Bowman is entitled to recover 10,000 from Raman. Examine this contract. Well, यहाँ पे reasonable compensation can be paid as a penalty and यहाँ पे वही part use किया गया है. Okay, so breach of a contract में कहाँ पे penalty अगर clause लिखी हो तो penalty can be recovered. अब क्योंकि A ने B से contract किया था, जैसे रमन ने बोवन से contract किया था एक A 10,000 रुपए के फाइन के बारे में, and he fails to pay, the B is entitled to recover the damages from A as per court consideration. Okay, so यहाँ तक आपको देखते हैं and these questions definitely will help you for your examinations. Okay, so keep studying well for your examinations. Goodbye.